Hello aspirants, welcome to our channel Nirmal Vidya-UPSC Civil Service Exam Foundation Course NCERT History Class 6. I am Kshama and I am going to teach you Ancient Indian History by ROMILA THAPAR, Chapter 1, Early Man. We will be starting our foundation course with basic NCERTs and I will try to cover every detail of the syllabus of UPSC CSE for you all. For this to happen, I need your cooperation and appreciation to share and subscribe our channel as much as possible to the general aspirants so that it can help many. There is a disclaimer here. This channel is an independent educational initiative created to assess aspirants of the UPSC Civil Service examination. The content presented here is for the academic purposes only and is not affiliated with any government body, coaching institute, organization, or religious community. All rights are reserved by the creator of this channel. Unauthorized copying, reproduction, or distribution of the material is strictly prohibited. References, images, and external resources used remain the intellectual property of their respective owners and are shared here under fair use for education. Any revenue generated from this channel is solely intended to sustain and support the continuation of educational work. Viewers are encouraged to cross-check information from standard reference books and official UPSC sources. We will start with the introduction. Why to study history? तो हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? Studying history is one of the way of getting to know the past. तो हम इसलिए हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हमें हमारे पास्ट की जानकारी मिल सके, हमारे कंट्री में जो भी घटनाएं पूर्व में घट चुकी है और हमारे पूर्वज कैसे रहते थे इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है हिस्ट्री से। तो जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? जो भी रिकॉर्ड्स है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द एंशिएंट बुक्स written on either dried palm leaves or the thin bark of birch tree or on paper. तो हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स है पुराने, जो हिस्टोरियंस प्रिजर्व करके रखते हैं, वहां से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. जैसे वेरी ओल्ड टेक्स्ट रिटन इन पाली एंड प्राकृत एंड अदर्स इन संस्कृत, अरबिक एंड तमिल. These are the very old text written in these languages. So these are the classical languages. In Europe, ancient manuscripts were in Greek and Latin, in Western Asia in Arabic and Hebrew, and in China, classical Chinese was used. So these are the languages we have manuscripts. Sanskrit manuscripts were written in Devanagari script. So in this book of Indian history, the author has mentioned about why to study history, what are the manuscripts and in which languages they were used, and what is the script of the Sanskrit manuscript. The author here also says that history is an attempt to understand how and why our ancestors lived as they did and what difficulties they met with and in what manner they overcome them. So, author यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमें कि कौन से डिफिकल्टीज हमारे एंसेस्टर्स को फेस करनी पड़ी और वो उसका सोल्यूशन कैसे निकाल पाए. इसीलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है. It is important for you to be acquainted with the past because then you will understand better what is happening in India of today. तो हमें हिस्ट्री इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि आज हम जब इंडिया में रहते हैं, इसके पूर्व में इंडिया में
कैसे कैसे सिचुएशंस आए थे, ये हमें हिस्ट्री द्वारा पता चलती है। तो हमारे एंसेस्टर्स ने उन सबको कैसे फेस किया था, ये जानकारी अगर हमें मिलेगी तो हम आज के इंडिया में कोप अप कर पाएंगे। The past of India is very long. It goes back several thousands years. We learned about it from the evidence which our ancestors have left behind. So, इंडिया का पास्ट बहुत ही पुराना है, बहुत 1000 years पहले का है, और हमारे पास एविडेंसेस है इन द फॉर्म ऑफ रिटन टेक्स्ट। तो ये रिटन टेक्स्ट बहुत पुरानी है, जो कि ये लैंग्वेजेस में पाली, प्राकृत एंड अदर संस्कृत लैंग्वेजेस या अरबिक एंड तमिल में लिखी गई है। और यूरोप स्टेट्स में मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे ग्रीक, लैटिन, वेस्टर्न एशिया में अरबिक, हिब्रू एंड चाइना में क्लासिकल चाइनीज यूज किया गया था। और जो संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट था वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो ये लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दो डिफरेंट चीजें हैं, हम आगे पढ़ेंगे क्या है। So here is a chart showing some Indian script. Ashoka, Brahmi of 4th century, Central Asian cursive Gupta script, a Tibetan script, Sarada, which is the 8th century AD, Sanskrit, 6th century AD, Old Kannada, Vateluttu mixed with Grantha, it is of 9th century AD, Bengali, then Gujarati, Multani, and Tamil. See how beautifully the scripts have been written. So we'll be discussing here what are the basic definition of history, language, script, inscription, and archaeology. These are the terms used in this chapter. So what is history? Historians define history as the human-focused academic discipline that studies, interprets, and explains the past through the collection and analysis of evidence to construct narratives about change, continuity, and human action in context. तो हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने कैसे डिफाइन किया है कि ये ह्यूमन फोकस एकेडमिक डिसिप्लिन है जो स्टडी करता है और इंटरप्रेट करता है हमारे पास्ट को, जिसके जो एक कलेक्शन है और उसका एनालिसिस हो रहा है, जो भी हमारे पास एविडेंसेस मिले हुए हैं, तो उसका नरेटिव क्रिएट कंस्ट्रक्ट करना है या क्रिएट करना है, जो भी चेंजेस आए हमारे पास्ट में उसी को कंटिन्यूटी में, और जो ह्यूमन एक्शंस हुए थे पास्ट में उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफाइन कर रहा है। तो पूरा पूरा इसका मतलब है कि जो भी हमारे ह्यूमन में जो एकेडमिक डिसिप्लिन था वो हिस्टोरियंस इंटरप्रेट करते हैं, और उसका जो कलेक्शन है, एनालिसिस है, और ह्यूमन के जो एक्शंस थे पास्ट में उसका एक पूरा कलेक्शन है। लैंग्वेज, a complex, historical, developed system of arbitrary vocal and visual symbols used for communication, characterized by cultural and temporal diversity. तो लैंग्वेज क्या है? ये एक हिस्टोरिकली डेवलप्ड सिस्टम है जो कि हमारे वॉइस से, वोकल से, और जो विजुअल सिंबल्स है, जो सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे वो स्क्रिप्ट में जैसे अल्फाबेट्स हो गए, तो वो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और ये हर रिलीजियन में या बहुत डाइवर्स है, बिकॉज वी नो वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड सो मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया इटसेल्फ. So what is a script? Any particular system of writing, a system of symbols and rules that represent a language in written form. तो कोई भी जो लैंग्वेज है उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ राइटिंग है, या तो वो सिस्टम ऑफ सिंबल्स हो सकता है या कुछ रूल्स है। जैसे हमारे हिंदी में कुछ रूल्स हैं, इंग्लिश में है, मराठी में है, अदर लैंग्वेजेस में
जैसे हिंदी और मराठी दोनों भी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, लेकिन उसके भी पर्टिकुलरली कुछ रूल्स होते हैं। तो स्क्रिप्ट यही है कि कोई भी लैंग्वेज है उसका रिटन फॉर्म, ये स्क्रिप्ट है। तो लैंग्वेज क्या है? जो भी हम वोकली या विजुअल सिंबल्स के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं लैंग्वेज। और स्क्रिप्ट क्या है? जो भी लैंग्वेज हम रिटन फॉर्म में देते हैं उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। अब इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शंस are nothing but the text engraved or carved onto a hard durable surface, durable यानी long lasting surface, serving as a crucial archaeological and literary source for understanding the past। तो इंस्क्रिप्शंस ये होते हैं जो कि कार्व किए गए हैं या एनग्रेव किए गए हैं किसी भी हार्ड सब्सटेंस पे, जैसे पिलर्स पे होते हैं या बहुत सारे टेम्पल्स में होते हैं, इंस्क्राइब किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, जो कि एक लिटरेरी सोर्स है हमारी हिस्ट्री को जानने में। आर्कियोलॉजी, the scientific study of past human life and activities through the recovery and analysis of material remains। अब आर्कियोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन की, जो कि पास्ट में रह चुके हैं या हमारे हिस्ट्री में रह चुके हैं। तो हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी दो डिफरेंट टर्म है। हिस्ट्री का मतलब होता है, हमने आगे देखा है, आई मीन टू से ऊपर देखा है कि वो इंटरप्रेट करता है पास्ट को, कि कैसे लोग रहते थे, कैसे सिचुएशंस आई थी। और आर्कियोलॉजी क्या है? ये मटेरियल रिमेन्स है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। तो इसकी स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट एंड एक्टिविटीज थ्रू द रिकवरी ऑफ एनालिसिस ऑफ मटेरियल रिमेन्स। तो जो भी हमको एक्सकवेशन में मटेरियल्स है उसके थ्रू हम हिस्ट्री का पता लगाते हैं, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। और जो इसकी स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं, मैन एज अ नोमैड। सो इट टुक thousands of years for primitive man to change into civilized man। तो जो प्रिमिटिव मैन थे उनको चेंज होने के लिए बहुत हजारों साल लग गए। तो 3 लाख years टू चेंज फ्रॉम फूड गैदरर्स टू फूड प्रोड्यूसर्स। अब फूड गैदरर्स कौन है? जो फूड कलेक्ट करते हैं। और फूड प्रोड्यूसर्स सिंपल टर्म में जो फार्मिंग या एग्रीकल्चर की तरफ मुड़े। तो उनको 3 लाख years लग गए फ्रॉम चेंजिंग टू फूड प्रोड्यूसर्स। Men were nomads, they wandered from place to place in search of food and shelter। तो men क्या थे? nomads थे, जो एक जगह से दूसरी जगह में घूमते थे खाना और शेल्टर के लिए। People lived in caves or built small shelters amidst the leafy branches of large trees। अब ये nomad people कैसे रहते थे? वो केव्स में रहते थे, या तो गुफाओं में रहते थे, या फिर बहुत घने जंगल में छोटे से शेल्टर में, जहाँ पे वो लीफ या ब्रांचेस के बीच में कवर करके रहते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ वेदर एंड वाइल्ड एनिमल्स। दे वर ओनली अफ्रेड ऑफ वेदर बिकॉज वेदर में वो तो कीव में रहते थे, और वाइल्ड एनिमल्स में। सो दिस इज अबाउट द नोमैड। We will be discussing it in detail। अब ये ग्रुप में यूजुअली रहते थे, उसमें मेन रहते थे, वुमेन रहते थे, चिल्ड्रंस भी होते थे। ये सभी एक साथ घूमते थे। दे डू नॉट यूज टू वॉन्डर अलोन। लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट इन दोज टाइम्स because people ate the fruit of the trees and hunted whatever animals they could। So they do not know how to grow vegetables or grains। तो nomad peoples को नहीं पता था
कि खेती या एग्रीकल्चर कैसे करना है. They only used to wander from place to place in search of food. तो एक जगह अगर उस एरिया का अगर खाना या एनिमल्स कम हो जाते थे या नहीं प्राप्त होते तो वो कहीं और एरिया में शेल्टर के लिए जाते थे. In this way, they used to wander. Now, Stone Age tools and weapons. So, early Stone Age tools. See, this is the tools and objects used by man in the food gathering stage. These are the tools they used to make. Early Stone Age tools 1 to 3. These are the early Stone Age 1, 2, and 3. These are the early Stone Age tools. Pebble tools used as chopper, made by chipping parts of the pebble to produce a steep cutting edge. Then second is the hand axe, an all-purpose tool, generally pear-shaped with a continuous working on edge on both sides. Third one is the cleaver, okay, showing a wide chisel edge. Then middle Stone Age tools. See, these are the middle Stone Age tools. 4 is the borrowed. Arrowhead and scraper. Late Stone Age tools. So these are the late Stone Age tools. See how finely they have made and sharpened. 1 to 3 से जो लेटली थे तो ये ज्यादा शार्पन थे. सो उनका जो मॉडिफिकेशन हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ स्लोली दे लर्न टू मेक देयर टूल्स फॉर द suitable purpose. Flint, type of stone used for producing fire or making tools and weapons. Flint is a type of stone which was used to produce fire. अब ये कैसे हो जाता था? The discovery of fire was accidental by striking together two pieces of flint. दो फ्लिंट को स्ट्राइक करने से एक स्पार्क होता है. तो हमको ये नॉर्मली पता है कि दो फ्लिंट या स्टोन को घिसने से या स्ट्राइक करने से एक स्पार्क होता है. तो वो हम ड्राइड लीव्स या ट्विग्स में लगाने से वहां पे फ्लेम्स का बर्स्ट होता है. द डिस्कवरी ऑफ फायर वाज एक्सीडेंटल. सो ये एक्सीडेंटल था और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी in history. By striking together two pieces of flint produced a spark which when it touched by dried leaves and twigs burst into flames. Some of these are found in the valley of Sohan River in Punjab. In Kashmir Valley, bones of animals were also used. The smaller piece of stone, usually chip and flakes, were worked carefully to be used as knives and scrapers for finer work and tied to arrows and spears. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि फ्लिंट फायर प्रोड्यूस के लिए स्टोन यूज होता था या और मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स के लिए. और डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ था वो एक्सीडेंटल था. दो फ्लिंट को आप एक दूसरे से स्ट्राइक करो फिर उसको ड्राइड लीव्स में लगाओ. तो दिस वाज द एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ फायर. फिर बोल रहे हैं कि सोहन रिवर के पास ये स्टोन पाए जाते हैं. कश्मीर वैली में बोन्स ऑफ एनिमल्स से हमको पता चलता है. वहां पे बहुत सारे टूल्स मिले हैं हमें. द स्मॉलर पीसेस ऑफ स्टोन यूजुअली चिप एंड फ्लेक्स वर वर्कड केयरफुली. तो इस लाइन में क्या बता रहे हैं कि जो छोटे स्टोन है अभी हमने देखे हैं छोटे छोटे स्टोन्स जो लेट स्टोन एज में थे तो वो कितने केयरफुली वर्क किए हैं और वो यूज किए गए थे नाइफ्स और स्क्रेपर्स के लिए फॉर फाइनर वर्क और हंटिंग के लिए एरोज और स्पीयर्स में
इसका यूज होता था. Implements were found along riverbed in foothills of Himalayas and certain parts of Deccan Plateau, such as Narmada Valley. So these are the areas we found the Stone Age tools and weapons. And how the clothes of early men were? So primitive men wore little clothing as the weather was warm. So weather बहुत गर्म था, तो they used to wear little clothing. Rainy season and cool weathers में they used to wear animal skin, bark of trees and large leaves as their clothes. So summary. History gives us knowledge of the past. अब wrap up करने में क्या है? History हमें simple past की knowledge देता है. हमारे पूर्वज कैसे जीते थे, कैसे उन्होंने एक के बाद एडवांसमेंट में आए. We learned past from tools, potteries, coins, old buildings, inscriptions and old manuscripts. अब हमें पास्ट की जानकारी कहाँ से मिल रही है? जो भी हमें टूल्स, पॉटरी, कॉइन्स, बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस या मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, उससे उसकी स्टडी से हमें पता चल रहा है कि हिस्ट्री में क्या क्या घटनाएं घट चुकी है. इन द बिगनिंग मैन वॉज अ नोमैड. स्टार्टिंग में मैन नोमैड थे. दे यूज्ड टू वैंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्ड इन केव्स, learn to make fire, tools and weapons. They used to hunt animal and eat their flesh. Or in winter, they used to wrap the skin of the animal they killed to keep themselves warm. And the nomad people used to wander from place to place in groups and later on took to the first step towards civilization. So this is our summary. I hope you all understood. I have taught you in very slow and detailed format. If any queries regarding anything, please comment, share and subscribe my channel. We are not makers of history, we are made by history. It is a very famous quote by Martin Luther King Jr. तो मार्टिन लूथर किंग क्या कह रहे हैं कि हमने हिस्ट्री नहीं बनाई, हिस्ट्री ने हमें बनाया. So this is the way history is very important to study as a human perspective also and in the UPSC CSE perspective also. So like, share and subscribe my channel. I need your cooperation and appreciation. Thank you for watching my video. We will be coming again with next chapter. Till then, take care.